अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मॉम्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं ट्रिकी वर्ड्स के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थर्ड फेज़ एंड फोर्थ फेज़ के बारे में बताऊंगी। सो हियर यू आर, दिस इज़ द थर्ड फेज़। सो हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द थर्ड फेज़ ऑफ ट्रिकी वर्ड्स. So here you can see this is the word all. All. अब आप इसमें देख सकते हैं all में साउंड ओ की कुछ बन रही है, पर अब आप इसको बच्चों को साउंड्स के थ्रू नहीं करवाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा, यू कैन नॉट फॉलो द फोनेटिक्स इन ट्रिकी वर्ड्स बिकॉज that's why they are tricky words, that you cannot follow the phonemes, that you cannot follow the sounds, so you cannot say it al. अगर आप अपने बच्चे को कहेंगी कि इसको साउंड्स के थ्रू पढ़ो, like this a l al, obviously ये wrong हो जाएगा. So we will not at all follow the phonetic rule. We will only read the word from left to right. Okay? हम बच्चों को इस वर्ड को पिक्चर करने को कहेंगे. We will only show them this word and we will read all, all, all. Okay, like this. Next word, she, she, she. SH makes one sound, that is sh sound, sh sound. एंड इसी तरह CH जो कुछ वर्ड्स होते हैं, CH जब साथ होते हैं लाइक SH, दे मेक च साउंड, च. दिस इज़ श एंड व्हेन इट इज़ CH दैट विल बी श. वो ग्राफीम्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. ओके, here is the next word, her, her, her. अब ये देखें, यहाँ कुछ कुछ मैच, यहाँ her. नेक्स्ट वर्ड, you, you. आप 3 to 4 टाइम्स इसको रीड करने के बाद बच्चे को पॉइंट आउट करें ऐसे, you, you, so he will understand the actual meaning of the word. Was, was. Now here you can see again a की sound o pronounce हो रही है, right? We will not follow the sounds, we will only read the word. Was. It is very simple. He, he. You have to repeat the one word at least 3 to 4 times. Okay? आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, but minimum 3 to 4 times आपको करना ही करना है. They, TH makes a sound th. हम जब भी ये 2 लेटर्स एक साउंड बनाते हैं, हम उनको ग्राफीम्स कहते हैं. तो जब भी आप कभी कहीं देखें कि व्हाट आर ग्राफीम्स या लर्निंग अबाउट ग्राफीम्स, किसी भी जगह आप रीड कर रही हो, तो आप इसको समझ सकती हैं कि TH वर्ड्स आर ग्राफीम वर्ड्स. जैसे जिन वर्ड्स में TH प्रोमिनेंट हो रहा है वो ग्राफीम्स होते हैं, स्मॉल वर्ड्स होते हैं. और जिनमें श प्रोनाउंस हो रहा है ज़्यादा, जिनमें च हो रहा है लाइक च चेयर, च चेन, च चॉकलेट, च चॉक, लाइक दिस. So these were the tricky words from the third phase. Now let's come to the fourth phase. Okay, now here you can see some other tricky words. These tricky words are from the fourth phase. So let's start reading them. Some, some, some. Like, like. You cannot say likey, it's just like. Like, like, like. Next word,
Again, E is silent. Come. 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 Next word. Have. 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 Out. 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 Are. Are. Next word. So. 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 Next word. Do. 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 Just like this. Just hold the card in front of your child and just read the word like this, in this way. And इसके अलावा आप you can spell the word as well. D-O, do. So these were the fourth phase of the tricky words. इसके लिए अगर आप चाहें तो एक सॉन्ग भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं. इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सॉन्ग. खुद अपनी क्रिएशन कर सकते हैं आप लोग. सो मैंने ट्रिकी वर्ड्स के लिए एक सॉन्ग प्रिपेयर किया है और वो कुछ यूँ है, यानी कि आप जब अपना लेसन स्टार्ट करने लगेंगी देन यू कैन सिंग अलॉन्ग विद योर चाइल्ड एंड आप उसको बिठाएं और आप उसके सामने ये वर्ड्स रखें एंड यू हैव टू सिंग लाइक दिस. लेट्स लर्न ट्रिकी वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स, tricky words, let's learn tricky words, let's learn tricky words. फिर ये वर्ड सारे जितने भी पढ़े हैं आप इनको रिपीट करेंगी one time at least. Some, like, out, or, come, so, have and do, they are tricky words, they are the tricky words. They can trick you, they can trick you, they are the tricky words. They are just the tricky words, like this. आप कुछ भी इस तरह से बना सकते हैं. It's not a hard and fast rule. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी होता है. मैं तो कुछ भी कर लेती हूँ, किसी भी तरह की ट्यून बना लेती हूँ. सो मुझे ये ट्यून बहुत अच्छी लगी. Let's learn tricky words, let's learn tricky words, they are the tricky words, like this. So thank you for watching this video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.